Yep. See, everyone, is this clear now? मुझे पहले वो बता दो, दोनों केस में, in the case where AB is on the left side and in the case where CD is on the left side, the first and second case, according to this, in both the cases, is the book rotating in the same sense? Yes or no? Is the book rotating in the same sense? Yes or no? क्या होगा? Yes or no? No, the answer is no. खुद से करके वापस ट्राई कर लेने, the answer is no. It will not rotate in the same sense. ठीक है? मतलब अगर if this is ABCD, here if the current in CD will remain, देखो first case में, second case में current in CD is the same. ठीक है? So if it remains the same, if the current in ABCD remains the same without changing, मतलब CD में हर बार नीचे की तरफ है, AB में हर बार करंट ऊपर की तरफ है. So what happens is here, for the first half rotation ऐसे होगा, for the second half rotation ऐसे होगा, मतलब it will keep on oscillating. But if you look at your fan तो continuously एक ही direction में rotate होगा ना. The fan continuously rotates in the same direction. Yes. ऐसे ही होगा ना, fan तो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं कि fan oscillate करेगा. Pendulum जैसे it will not oscillate. पहले clockwise, then anti-clockwise, then clockwise, then anti-clockwise. That doesn't happen. It rotates in the only along one direction. Yes. तो ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पे भी. Right. So for that to happen, what we need is we need the direction of current to reverse. Direction of current change होना चाहिए. CD में वापस ऐसा होना चाहिए. CD में current ऊपर की तरफ and AB में नीचे की तरफ. मतलब CD में if you look at it, first case में CD में current नीचे की तरफ है, second case में current ऊपर की तरफ. For that to happen, we make use of split rings. Basically, split rings क्यों use करेंगे हम? To change the direction of current, to reverse the direction of current. समझ में आ रहा है ना अभी? How it does it, I'll explain. But उसका use वो है. Split rings are used to reverse the direction of current. Yes. Split क्यों? Why split? Because वो split हो गया. Complete ring को हमने दो parts में split किया. That's why it's split rings. Yes. समझ आ रहा है ना? उसका नाम इसलिए split ring हो गया. ठीक है? How does it do? मतलब ऐसे रिवर्स कैसे होगा? अब देखो, अगर ये एक रिंग हो गया, ये दूसरा रिंग हो गया, is one ring, this is the other ring. ठीक है? अब देखो, ये कॉइल मान लेना, रिंग भी रोटेट करेगा, the ring will also rotate. Okay, the ring will also rotate, but brush जो है, brush will be fixed. ये एक ब्रश हो गया. I'll take the one brush X. ब्रश क्या हो गया? X is fixed. तो रिंग्स जो है वो रोटेट करेंगे. ठीक है? तो अब पहले देखो, one is initially वीडियो देखेंगे तो अच्छा होगा. इनिशियली ये कनेक्टेड था A से, whereas this is, let's suppose this P, this is Q. The split ring P was connected to A, है ना?
split ring P is connected to A, P to A, and Q किससे connected है? Q किससे connected है? Q is connected to D. समझ में आ रहा है क्या? यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ पे P is connected to A, Q is connected to D. Yes, yes or no? I'll take it step by step, but if I'm asking whether it's clear or not, तभी पूछ लेना डाउट है तो, or else I'll not explain again. P is connected to A and Q is connected to D. Yes, ऐसा हो गया ना? अब देखो, so when P is connected to X, and देखो यहाँ पे X is connected to the positive terminal of the battery. तो करंट P से लेकर X में जाएगा, the brush X, then split ring P, then A में. करंट कैसे जाएगा? करंट का डायरेक्शन होगा X to P to A, then वापस B C D S. ठीक है, ऐसे हो जाएगा. समझ पा रहे ना? अब देखो, if it is this way, then करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? A to B होगा या B to A होगा? इस केस में करंट का डायरेक्शन A to B होगा या B to A होगा? कैसे होगा? When P is connected to X, कैसे होगा करंट का डायरेक्शन? A to B या B to A? Everyone, आपने स्कूल में पढ़ लिया ये सब, तो it should be more easier. देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे? X to P, P to A to B, right? So first case is when X is connected to P. तब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? करंट is from A to B, B to C and C to D. ठीक है? अब P is rotating, Q is also rotating. After some time क्या हो जाएगा? After some time Q ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे एक और ब्रश है, and P ऐसे कुछ, this will become P and this will become Q. घूम रहा है ना रोटेशन के हिसाब से. कुछ टाइम के बाद Q will also come in contact with X. Yes or no? After some time Q will come in contact with X. Yes or no? इसलिए that video is important. क्लास के बाद वापस go through the video. ठीक है? Now मुझे बता दो, when X is connected to Q, ठीक है? अब देखो Q के साथ क्या कनेक्टेड है? Q के साथ क्या कनेक्टेड है? हाँ, Q के साथ A कनेक्टेड है क्या? D कनेक्टेड है क्या? A और D? Look at the video. Look at not the video. Look at the diagram here. Q के साथ क्या कनेक्टेड है? तो Q what is connected? D और A? क्या कनेक्टेड है Q के साथ? Q and D, right? Look at the diagram. Q and D are connected. So अब कैसे होगा? करंट जो होगा अभी, करंट कैसे फ्लो होगा? X, पहले करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा बैटरी से, पहले X में जाएगा, X से Q में जाएगा, Q से D में जाएगा, राइट? सो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? देखो यहाँ पे आई एम राइटिंग इट डाउन. X to Q to D to C to B to A. A से लेकर किस में जाएगा? A किससे कनेक्टेड है? A P से कनेक्टेड, राइट? A से लेकर P में जाएगा, P से लेकर Y में जाएगा एंड वापस बैटरी में. समझ में आया ना सबको? Yes or no? Yes. अब देखते हैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा. करंट इस केस में करंट इज फ्रॉम D to C and B to A. Yes, समझ में आ रहा है ना? तो फर्स्ट केस में करंट का डायरेक्शन था A to B, बट सेकंड केस में करंट का डायरेक्शन हो गया B to A. कैसे हो गया? B to A. डायरेक्शन रिवर्स हुआ क्या? With the direction of current reverse,
Is the direction of current reverse? Did the direction of current reverse? Yes or no? I'll again repeat, but पहले जिसको भी समझ में आया वो तो बता दो. Did the direction of current reverse? A to B था first case में, second case में B to A. Change हुआ ना? Yes. The same happens with C to D. देखो first case में C to D, second case में D to C. अलग है ना? Reverse हुआ ना? Change हुआ ना वहाँ पे? Right? So this is what the split rings do. Split rings reverse the direction of current. क्या करेंगे वो? They reverse the direction of current. ठीक है? I'll again repeat things. ठीक है? I'll again repeat this step. अब ध्यान से सुन लेना. If you are still not able to understand, आपको वीडियो देखना पड़ेगा and again you have to go through the class recording. Then it will become clear to you. ठीक है? Or else I'll keep it this way. यार क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे? Just a minute. कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. Not able to draw this. This is brush X. This is P. This is Q. P and Q, what are P and Q? P and Q are split rings. ठीक है? अब करंट कहां से फ्लो करेगा? पहले देखो, बैटरी से फ्लो करेगा. बैटरी से किस में जाएगा? पहले बैटरी से करंट विल गो इनटू X. Current will first enter X. ठीक है? So the brushes X and Y are fixed. X and Y are fixed. They will not rotate. But P and Q they will rotate. And P जो है, P is connected to A. ऐसे कॉइल होगा ना यहाँ पे. P is connected to A. And Q is connected to what? Q is connected to D. ये कैसे बोल रहा हूँ मैं? Look at the diagram. Look at the figure. A and P are connected. D and Q are connected. पहले ये समझ में आ गया ना? A and P are connected. D and Q are connected. वो तो क्लियर होगा सबको. Yes. Yes, right. जिसको भी डाउट है, they should reply first. Right. तो ठीक है. तो अब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? पहले X में चालू होगा. ध्यान से देखो, X में चालू होगा मतलब बैटरी से लेकर पहले X में जाएगा. X से लेकर P में जाएगा. X to P, P to A, A to B, B to C and C to D. वैसे ही होगा ना करंट का डायरेक्शन? यस और नो? वैसे होगा ना? तो फर्स्ट केस में करंट का डायरेक्शन देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे. I'll again write it down. X to P, P to A to B, B to C, C to D, D to Q, Q to Y. ठीक है? मतलब if I look at the direction of current in A B में कैसे होगा? A to B होगा ना? A B में करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया? A to B. एंड C D में करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया? C D में डायरेक्शन कैसे हो गया? C to D. फर्स्ट केस में that's what happening. Yes. वो कौन सा केस होगा? When X is connected to P. That's the case where X is connected to P. समझ में आया? फर्स्ट केस क्लियर है ना सबको? I'll not again repeat things. तो अभी पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. फर्स्ट केस क्लियर है ना? Yes. Then I'm going to second case. Okay, second case, let's suppose I'll slightly modify the diagram also for our convenience to keep it simple. मान लेना कुछ टाइम के बाद they are rotating, right? They are rotating मतलब कुछ टाइम के बाद Q इस तरफ आ जाएगा, P इस तरफ आ जाएगा. Yes. Q is connected to D. P is connected to A. And obviously ऐसे होगा. समझ में आ रहा है ना? Q is connected to what? Q is connected to D. अब X जो है, X is in contact with which split ring? X is in contact with which split ring? Q or P?
x q के साथ कनेक्टेड है ना, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? पहले x में x to q, q से किस में जाएगा? d में जाएगा, d से कहा जाएगा c तक, then c to b, then b to a, then a to p, p to y। समझ में आया ना? तो वो लिख दिया मैंने x q d c d a p y। समझ आया अभी? This is when x is connected to q। Clear? Yes or no? अब if I compare the direction of current in DC या AB, पहले AB देखो, AB में करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया इस केस में? B to A हो गया, किसमें? B to A। एंड DC में कैसे हो गया? D to C। ठीक है? If I compare these two cases, did the direction reverse? A, B and C D देख लो, did the direction reverse? Yes or no? Yes or no? अरे कहां से नो हो गया? A B में करंट कैसे हो गया? फर्स्ट केस में इट इज फ्रॉम A to B, सेकंड केस में इट इज फ्रॉम B to A। तो इसका मतलब चेंज हुआ ना यहाँ पे? यस। So this is the work, is the use of the split rings, the reverse the direction of current। समझ आया ना सबको अभी? यस। अब मुझे बताओ, देखो कॉइल एक्सिल से कोई मतलब नहीं है, एक्सिल इज जस्ट फॉर सपोर्ट। हियर इट इज a coil which rotates, not the axle। मतलब एक्सिल भी रोटेट होगा, but the main reason for rotation is the coil। coil rotate करेगा and because of that everything else will rotate। ठीक है? Do not have any misconception। Clear? So again go into the working of DC motor। ठीक है? The axle and the split rings rotate। ये थर्ड पॉइंट समझ में आया ना सबको? अब वर्किंग में फर्स्ट 3 पॉइंट समझ में आया ना? यस और नो? यस। एंड मैं इतना लिख दूंगा, एंड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा? आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन व्हाट विल हैपन? कुछ तो होगा वहां पे। व्हाट विल हैपन? The direction of current will reverse। The direction of current will reverse। Yes? समझ में आ रहा है ना सबको? Yes। ठीक है? तो यहाँ पे there is something, आपको एक टर्म आपको पता चलना चाहिए। I have to know a term। There is something called as a commutator। Okay? Commutator मतलब devices used to change the direction of current। Device used to change the direction of current। So here which device or which part of the DC motor is acting as a commutator? Which part of the DC motor is acting as a commutator? कोई बता दो। The split rings are acting as what? The commutators। ठीक है? समझ आ रहा है ना सबको? So that's how the DC motor will work। ठीक है? That's how the DC motor work। Now if they ask you why should we reverse the direction of current, अगर क्वेश्चन आ गया, why should we reverse the direction of current? क्यों? करना ही क्यों ऐसे? डिस्कस किया हमने। Why? If it is not reversed, what will happen?
the rotation, complete rotation हो पाएगा, or will it oscillate? जैसे fan वाला example लिया मैंने, book वाला example लिया. What will happen? If the direction is not reversed, then ऐसे होगा ना, पहले clockwise, then anti-clockwise, ऐसे ही घूमेगा ना. जो book वाला example था, याद है ना? अरे क्या हुआ? If we do not reverse the direction of current, what will happen? It will oscillate. But if we do not reverse the direction of current, the coil will oscillate. To get a continuous rotation. These are the points. Okay, this is how you have to write down the answers. You have to be very particular. To get a continuous rotation, the direction of current should be reversed. Okay? समझ आ रहा है ना? And direction of current reverse करने के लिए what do we use? We make use of split rings. Split rings. ठीक है? समझ में आ रहा है ना सबको? Yes. ठीक है? Now I think we'll go into some problems. We'll go into the questions. देखो ये तो theoretical part है. This everything is theoretical. So आपके पास और कोई option नहीं होगा. You'll have to go through NCERT. देखो मैं अभी बोल रहा हूँ. This is sincere advice to you. Boards के लिए NCERT पढ़ना काफी जरूरी है. Your revision should be from NCERT. Your learning should be from NCERT. Main priority आपका NCERT होना चाहिए. Reference book. Any reference book. जैसे science के लिए चांद हो गया. Doesn't matter. All of them should be secondary books. Your primary book, your most priority should be given to NCERT. If you are following reference books, you are going wrong. You are not doing it the right way. Because reasoning जो questions होते हैं ना, reasoning type questions. For that you need your language. Technical language is required. Scientific language मार लेना. मतलब language मतलब सर English है ना, मतलब English ही है, agree. But you have to know how to present, how to write down the answers. If you do not develop that, you will lose marks. Many of you are not doing it properly. Many of you are not doing it properly, so आपको करना होगा. ठीक है? And for you to be able to do that, आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा. You cannot escape from that. You will have to go through the NCERT. And revision भी आपको NCERT से ही करना पड़ेगा. Yes. I hope you will do that, everyone. Solution हो गया ना? Just a minute. So look at this. We'll go into the questions. Question number 1, state Fleming's left-hand rule. ये हमने कर लिया. But I'll again tell you what to do in this Fleming's left-hand rule. Whenever they ask you to state it, आपको 2 points लिखना होगा. Even if it is of 1 mark, do not take the risk. First point आपको ये लिखना होगा state Fleming's left-hand rule में. It is used to write. It is used. उसका use लिखो पहले. It is used for what? Fleming's left-hand rule किसके लिए use करेंगे? किसके लिए? Fleming's left-hand rule is used for what? It is used to find out the direction of. यार वापस वरुण same answer बोल रहे यार तुम. Are you even listening to the class? It is used to find out the direction of force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay? And then you have to state you have to take your left hand, the 3 fingers should be perpendicular, index finger should point along the direction of field,
the middle finger should point along the direction of current, then thumb will point along the direction of force. ठीक है? This I think हमने notes में लिख लिया. Same जो आपने notes में लिखा वो same आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है? Yeah. Now question number 2. Why does a current carrying conductor experience a force in a magnetic field? Can anyone tell? क्यों? Why does it experience a force in a current carrying magnetic field? Basically because current carrying wires will have magnetic properties. You can give that answer. Okay? Let's still go with the answer here. इन्होंने क्या दिया? We know that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field. This field exerts a force on a magnet placed near the conductor. Okay? Obviously that's the first case. In accordance with the Newton's third law, the magnet also exerts equal and opposite force on the current. मतलब उनका मतलब क्या है आपको? What does it mean? If you have a wire here, wire is carrying current. Because of this current carrying wire, if I place a magnet here, on that magnet will there be any force because of the wire? On the magnet will there be any force because of the wire? Yes or no? Yes or no? On the magnet will there be any force because of the wire? The answer is yes. Right? There is force on magnet. The answer क्या होगा? There is a force on magnet, or whenever a magnet is placed. I hope you are writing down answers. It's important. Whenever a magnet is placed near a current carrying wire, Srikar, switch off your video. Whenever a magnet is placed near a current carrying wire, there will be a force. There will be a force on the magnet because of the wire. Yes? Correct, right? Then by Newton's third law, which you already know, for every action there is an equal and opposite reaction. By Newton's third law, there should be a force on the wire when it is placed near the magnet अच्छा एक मिनट रुको force on the current carrying wire लिखो current is important there force on the current carrying wire when it is placed near a magnet that is in a magnetic field समझ आ रहा है ना आपको This is clear समझ आया ना सबको डन
लिख लिया आपने? Then let's look at question number 3. What is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field? For when, not what. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field minimum? Minimum कब होगा? कोई बता दो. When will the force be minimum? When will the force be minimum? आज भी डिस्कस किया हमने. When magnetic field and current are in the same direction. मिनिमम मतलब जीरो, राइट? यहाँ पे जीरो पॉसिबल है ना? कब पॉसिबल है? When the magnetic field and current are in same direction. Write it down. Minimum कब होगा? When magnetic field and current are in same direction. ठीक है? Then when is it maximum? When is it maximum? When they are perpendicular. ठीक है? When current and magnetic field are perpendicular. ठीक है? Clear everyone? कोई डाउट है इसमें? Look at question number 4. फोर्थ में आंसर क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो. thumb is along the force, current is towards left, middle finger current हो गया, तो index finger जो है it is towards us or away from us. कैसे होगा? Anyone? यार अभिषेक, towards us or away from us? Keep it simple, right? It is towards us. Everyone, is this clear? कैसे होगा? It will be towards us. Okay. Question number 5. 5 is important. Look at question number 5. सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. What kind of energy transformation takes place in an electric motor? कौन सा? कैसे? सबसे पहले एनर्जी किसमें होगा? इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले एनर्जी किसमें होगा? Who will supply the energy? Electricity, electrical energy, right? So what type of transformation takes place? Electrical से लेकर it will rotate finally. So electrical to mechanical. किसमें? Electrical to mechanical. समझ आ रहा है ना? Electrical to mechanical. Then name any two devices which use electric motor as an essential component of working. कुछ भी बोल देना, which rotates, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है? You can take anything for an example. It's up to you. कुछ भी बोल दो. Anything will work. Anything which rotates. हाँ, washing machine चलेगा, fan चलेगा. Anything else? Any other example? फैन, वॉशिंग मशीन के अलावा और कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? मिक्सर, कंप्यूटर्स में कूलर्स,
राइट, उसमें भी काम करेगा, राइट। देन और किसमें, विक्सर्स भी होता है ना, विक्सर्स में भी काम करेगा, विक्सिंग मशीन्स, टरबाइन्स, एरोप्लेन्स, राइट। मैं कुछ भी केस दे लेना, डैम टरबाइन्स गलत है, डैम टरबाइन्स आर रॉन्ग, टरबाइन्स ऑफ एरोप्लेन इज करेक्ट, डैम टरबाइन्स गलत है। टेलर मशीन में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ गया, इलेक्ट्रिकल टेलर मशीन बोल देना, हो जाएगा, मैनुअल टेलर मशीन नहीं, इलेक्ट्रिकल टेलर मशीन में हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, state what would happen to the direction of current, rotation of a motor if the direction of current is reversed. If it is reversed, what will happen? Will anything happen? The direction of rotation will be the same. Okay, direction of rotation of motor will be the same if the direction of current is reversed. Okay, discuss कर लिया हमने. Question number 7. Explain the underlying principle of an electric motor. Basic principle of an electric motor. It's important. Basic principle of electric motor क्या होगा? Look at this. Principle क्या है यहाँ पे? Basically, whenever there is current flowing through a conductor and that conductor is placed in a magnetic field, then क्या हो जाएगा? Then there will be force on that. ठीक है? और कुछ नहीं. Look at this. ये जो part है principle दिया हुआ है. When a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, क्या हो जाएगा? It experiences force and rotates. इतना लिख देना, हो जाएगा. That's okay. Then question number 8. What happens to a force on a current carrying conductor placed in a magnetic field? First case में क्या होगा? If current increases, will the force increase? If current increases, will the force increase? Yes or no? Make it first. It will increase, right? Length of conductor increase होने से क्या होगा? It will increase. First case and second case will increase. Write it down. लिख लेना. Remember things, okay? First case में increase होगा, second case में भी increase होगा. Third case, direction of current and magnetic field are reversed. Nothing will change. ठीक है? क्या होगा? Nothing will change. It remains the same. ठीक है? Third में remains the same. Fourth में direction of current is reversed while changing the direction of magnetic field. While without changing, मतलब magnetic field is not changed, the direction of current is changed. Fourth में क्या होगा? कोई बता दो. Make it fast. Let me tell the answer because time नहीं है. Fourth में the force का direction change होगा. You can use left hand rule, Fleming's left hand rule to verify. Fourth में direction of current, direction of force will change. Clear everyone? So do this. Point 3 है ना? Point 3 खत्म कर लेना. That will be your homework. Point 3 and NCERT will be your homework. Okay? So the meeting will end. You need not join again. Meeting automatically end हो जाएगा. You need not join again. Okay? चलो then. Thank Bye you, sir. everyone. Okay? Thank you, sir.